السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ حیدرآباد کی عوام کے لیے راحت کی خبر، تلنگانہ میں مانسون کی آمد۔ منگل سے آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے جنوبی اضلاع میں بارش کا امکان۔ لوک سبھا الیکشن ریزلٹس، شہر حیدرآباد میں شراب کی فروخت پر ہوگی پابندی۔ بارز، ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور کلبز کو پولیس نے جاری کر دیے احکامات۔ لوک سبھا نتائج کے پیش نظر حیدرآباد پولیس کا بڑا اعلان، 4 جون کی صبح 6 بجے سے 5 جون کی صبح 6 بجے تک عوامی مقامات پر پٹاخے جلانے پر ہوگی پابندی۔ دہلی شراب گھوٹالہ کیس، BRS MLC کویتا کو کوئی راحت نہیں، درخواست ضمانت مسترد، کویتا مزید 1 ماہ 3 جولائی تک جیل میں ہی رہیں گی۔ میلاردیو پلی کے بابل نگر میں دیوار گرنے کا خوفناک واقعہ، 2 کمسینوں کی موت جبکہ دیگر 2 زخمی، پولیس نے درج کیا مقدمہ، تفتیش جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیلات پر ڈالتے ایک نظر۔ حیدرآباد کی عوام کے لیے راحت کی خبر ہے کہ تلنگانہ میں مانسون داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ناگر کرنول، گدویل، نلگونڈا میں مانسون داخل ہو گیا اور وہ ریاست بھر میں پیش رفت کر رہا ہے۔ عام طور پر جون کے دوسرے ہفتے میں تلنگانہ میں مانسون داخل ہوتا ہے، لیکن جاریہ سال 1 ہفتہ قبل ہی مانسون ریاست میں داخل ہو چکا۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کے مطابق اس مرتبہ معمول سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی دوران پیر سے بارش کی پیش قیاسی کی گئی اور منگل سے 3 دنوں تک ریاست کے جنوبی اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اتوار کی شب بھی شہر کے کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ ریاست میں مرکزی حکومت کے نئے قواعد کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیے جائیں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس کچھ دنوں تک پرانے طریقے پر ہی محکمہ ٹرانسپورٹ کے دفاتر میں جاری کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کو آسان بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے نئے رہنما خطوط کا جواب نہیں دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر گاڑی چلانے والوں کو پرانے طریقے پر ہی لرننگ لائسنس کے لیے سلاٹ بک کرنا پڑے گا اور متعلقہ RTA آفس میں تحریر امتحان میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد مستقل لائسنس صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی مقررہ وقت میں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ مرکزی حکومت کے نئے قواعد کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے لیے RTO آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف RTA کے رجسٹرڈ پرائیویٹ ڈرائیونگ اسکول ہی ٹیسٹ لے کر لرننگ سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔ لرننگ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر RTO آفس میں مستقل لائسنس کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے اعلان کے پیش نظر حیدرآباد میں شراب کی دکانوں، تاڑی کمپاؤنڈز، بارز، ریسٹورنٹس، اسٹار ہوٹلوں اور رجسٹرڈ کلبز میں شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی نے کہا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات میں بتایا گیا ہے کہ گنتی کے مراکز کے 200 میٹر کے دائرے میں سیکشن 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ پابندی منگل 4 جون کو صبح 6 بجے سے 5 جون کی صبح 6 بجے تک عائد رہے گی۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے لوک سبھا انتخابات کی گنتی اور نتائج کے پیش نظر منگل 4 جون کو عوامی مقامات پر پٹاخے پھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سٹی پولیس کمشنر سرینواس ریڈی نے کہا کہ سڑکوں اور عوامی مقامات پر پٹاخے پھوڑنے پر 4 جون کی صبح 6 بجے سے 5 جون کی صبح 6 بجے تک سختی سے پابندی ہے۔
इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस कमिश्नर ने कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया है। लोकसभा हल्के चेवरला पार्लिमानी इंतखाबात की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। ज़िले के अहदेदारों ने रंगारेड्डी ज़िले के चेवरला मंडल भंडारी श्रीनिवास कॉलेज में गिनती के इंतजामात का मुआयना किया। बादजा अफसरान के साथ जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। अहदेदारों ने बताया कि चेवरला पार्लियामेंट के 7 हल्कों चेवरला, श्रीलिंगमपल्ली, तांडूर, विकाराबाद, परगी, राजेंद्र नगर, महेश्वरम असेंबली हल्कों के वोट की गिनती को इस कॉलेज में किया जाएगा। सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती की जाएगी। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता की अदालती तहवील में फिर एक मरतबा तोसी की गई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक कविता के जुडिशनल रिमांड में तोसी के अहकामात जारी किए। अदालती तहवील का वक्त ख़त्म होने के पेश नज़र पीर को कविता को अदालत में हाजिर किया गया था, जिस पर अदालत ने ताज़ा तौर पर उनकी अदालती तहवील में तोसी के अहकामात जारी किए हैं। दिल्ली शराब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता के रोल से मुतालिक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ताज़ा अहकामात के मुताबिक वो 1 महीने तक यानी 3 जुलाई तक जेल में ही रहेंगी। दूसरी जानिब इस मामले में सीबीआई केस से मुतालिक कविता की अदालती तहवील में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हाजिर किया गया। शहर की आवाम एक जानिब गर्मी से परेशान है तो दूसरी तरफ पावर कट लाइट जाने से भी उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। आज पीर के रोज़ उप्पल इलाके की आवाम ने पावर कट को लेकर सब स्टेशन पर एहतजाज करते नजर आए। जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स के इलाके चिन्नापुरम चौरस्ते में गुज़िश्ता कई माह से पानी जमा हुआ है, जिसके सबब मुकामी अवाम और राहगीरों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियों पर जाने वाले हादसात का शिकार हो रहे हैं। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में मुतालिका ज़िम्मेदारों से कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, ताहम मुतालिका हुकाम की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुकामी अवाम ने म्यूनसिपल कमिश्नर ताज मोहन रेड्डी से फौरी तौर पर अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती और नताइज के सिलसिले में वरंगल की एडिशनल कलेक्टर्स राधिका गुप्ता और संध्या राय, DRO श्रीनिवास और DCP रविंदर के हमरा वरंगल में वोटों की गिनती के मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि पोलिंग के अमल में वोटों की गिनती के अमले और पुलिस के मजमूई तौर पर 2500 अहदेदार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आदिलाबाद कलेक्टर राज ऋषि शाह ने कहा कि लोकसभा की गिनती के अमल को पुरसुकून माहौल में मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने पीर के रोज़ यहाँ बनाए गए गिनती के मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को कई एक हिदायत भी दी और वोटों की गिनती से मुतालिक तफसीलात से जानकारी हासिल की। कलेक्टर ने इस मौके पर मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। అందరికీ నమస్కారం। మన ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో రేపు పొద్దున 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. వాటికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి అయినాయి. సో ముఖ్యంగా మనకి 3 కౌంటింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి.
మూడు కౌంటింగ్ లొకేషన్లో ఫస్ట్ లొకేషన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ గర్ల్స్, అక్కడ ఆసిఫాబాద్ అండ్ సిర్పూర్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ సంబంధించిన ఈవీఎం కౌంటింగ్ అవుతాయి. సెకండ్ లొకేషన్ వచ్చేసి టీటీడీసీ, అక్కడ ఆదిలాబాద్ బోత్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ సంబంధించిన కౌంటింగ్ అవుతాయి. ఇక్కడనే పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ కూడా అవుతాయి. థర్డ్ లొకేషన్ వచ్చేసి సజ్జయ్ గాంధీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్, అక్కడ నిర్మల్, ఖానాపూర్ అండ్ ముధోల్ ఈ మూడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ సంబంధించిన కౌంటింగ్ అవుతాయి. సో ప్రతి ఒక్క చోట్లో ఏవైతే కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయో, తర్వాత కౌంటింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంతోపాటు మొత్తం సీసీటీవీ కవరేజ్ ఉన్నాయి. సో ఏవైతే ఈవీఎం మూవ్మెంట్ ముఖ్యంగా స్ట్రాంగ్ రూమ్ నుంచి కానీ కౌంటింగ్ టేబుల్స్కి, తర్వాత కౌంటింగ్ టేబుల్స్ నుంచి సీలింగ్ రూమ్కి, సో వాటన్నిటికీ సీసీటీవీ కవరేజ్ కూడా ఉంటాయి. తర్వాత ట్యాబులేషన్ స్టాఫ్ కానీ ఇన్కోర్ డేటా ఎంట్రీ స్టాఫ్ కానీ వాళ్ళు కూడా కౌంటింగ్ హాల్లో కూర్చుంటారు. సో ఇలానే మొత్తం మన 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో ఈవీఎం కౌంటింగ్కి సుమారుగా 500 మందికి మనం ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ స్టాఫ్ సంబంధించిన సుమారుగా 100 మంది, సో సుమారుగా 600 మంది ఈ మనం గ్రూప్ డి ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, అటెండర్స్ కావచ్చు, కౌంటింగ్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు, సూపర్వైజర్ కావచ్చు, మైక్రో అబ్జర్వర్ కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వబోతున్నాము. దీంతోపాటు 3 జిల్లాలో 3 ప్లేసెస్లో అంటే 3 కౌంటింగ్ లొకేషన్స్లో 3 మీడియా సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. టీటీడీసీలో కానీ, తర్వాత సంజయ్ గాంధీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో కానీ, సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ గర్ల్స్లో కానీ అన్నిట్లో అక్కడ మీడియా సెంటర్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మన 6 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో 14 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆసిఫాబాద్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 16 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఈవీఎం సంబంధించిన. ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ 16 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ పెట్టడం జరిగింది. మనకి మినిమం అంటే ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 21 రౌండ్స్లో కౌంటింగ్ అవుతాయి. మ్యాక్సిమం అంటే ఆసిఫాబాద్ కానీ సిర్పూర్ కానీ అక్కడ 23 రౌండ్స్లో కౌంటింగ్ అవుతున్నాయి. సో సుమారుగా ఫస్ట్ రౌండ్ ఈవీఎం రౌండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది 8 o'clock స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ హాల్ వేరే ఉంది కాబట్టి ఈవీఎం కౌంటింగ్ కూడా 8 o'clock స్టార్ట్ అవుతాయి, పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ కూడా 8 o'clock స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి సైమల్టేనియస్గా 2 కౌంటింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. 3 ప్లేసెస్లో మన ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి అబ్జర్వర్స్ కూడా రావడం జరిగింది. వారు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చూశారు, వారు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యారు. సో ఇలానే అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. సుమారుగా మనకి ఒక్కొక్క రౌండ్కి పోస్టల్ బ్యాలెట్ వచ్చేసి 3 నుంచి 4 గంటలు పడతాయి. ఈవీఎం కౌంటింగ్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ రౌండ్ కొంత ఎక్కువ టైం 40 to 45 minutes తీసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఏవైతే కాన్సిక్యూటివ్ రౌండ్స్ ఉంటాయో అవి 20 నుంచి 30 minutes ఇలానే మనం ఒక అంచనా చేయడం జరిగింది. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామంటే 8 to 9 hours మధ్యలో ఏవైతే మొత్తం రిజల్ట్స్ ప్రక్రియ ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా ఒక పారదర్శక మేనర్లో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క టేబుల్కి క్యాండిడేట్స్ తరఫు నుంచి కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి కూడా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఐ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, అన్ని స్టాఫ్కి కూడా ఐడి కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, మీడియా పర్సనల్కి కూడా అథారిటీ లెటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఆరో టేబుల్ పక్కన కూడా ఎవరైతే కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ కూర్చుంటారో వాళ్ళకి కూడా సెపరేట్ ఎంట్రీ గురించి కానీ తర్వాత వాళ్ళకి కూడా ఏవైతే ఇప్పుడు సెపరేట్ ఐడి కార్డ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 3 టైర్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఉంది. ఫస్ట్ టైర్ వచ్చేసి మన స్టేట్ పోలీస్ ఉంది, సెకండ్ టైర్ వచ్చేసి స్టేట్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఉంది, అండ్ థర్డ్ టైర్ వచ్చేసి సిఏపిఎఫ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో 3 టైర్ సెక్యూరిటీ కూడా ప్రతి ఒక్క చోట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొబైల్ ఫోన్ సంబంధించిన మనకి క్యాండిడేట్స్ కానీ తర్వాత ఎలక్షన్ ఏజెంట్స్ కానీ కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ కానీ తర్వాత కౌంటింగ్ స్టాఫ్ కానీ వాళ్ళు ఎవరికి అలౌ లేదు. ఓన్లీ కొందరే ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిపోర్టింగ్ కోసం కానీ తర్వాత ఈటీపీబీఎస్ కోసం కానీ వాళ్ళకి అవసరం పడతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి మాత్రమే మొబైల్ ఫోన్స్ అలౌ ఉంది. సో ఇలానే అన్ని రకాలు ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్లో 360 మేనర్లో అన్ని ఏర్పాట్లు యాజ్ పర్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం చేయడం జరిగింది. రేపు ఒక ప్రశాంతంగా వాతావరణంలో అందరికీ వాళ్ళు ఏవైతే రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో రౌండ్ వైజ్ రిజల్ట్స్ అది కూడా క్యాండిడేట్స్కి కూడా అండ్ వాళ్ళ ఎలక్షన్ ఏజెన్సీ కూడా కాపీ ఇస్తూ ఒక పారదర్శక మేనర్ కూడా రేపు రిజల్ట్ ప్రక్రియ ఖచ్చితంగా పూర్తి చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. राजेंद्र नगर सर्कल मेलारदेव पल्ली के बाबिल नगर में कदीम दीवार गिरने से 2 कमसीन लड़कियां फौत हो गई जबकि दीगर 2 बच्चे शदीद जख्मी हैं। इतवार की शाम हैदराबाद में हुई शदीद बारिश से मकान की दीवार भीग गई थी जिसके सबब पीर की सुबह ये वाक़या पेश आया। पुलिस और मुकामी लोगों के मुताबिक बिहार, उड़ीसा व दीगर रियासतों से बहुत से मजदूर बाबिल रेड्डी नगर में मुकीम है जो मुकाम सनतों में काम करके रोज़ी कमा रहे हैं। बताया जाता है कि ये बच्चे बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफसीलात इकट्ठी की और ज़ख्मी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। मलकपेट इलाके के मुसरामबाग चौराहे पर वाक़ रेड रोज़ बेकरी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया।
पीर की सुबह की अवलीन सातों में आग के शोलों को देखकर मुकामी अफराद ने मलकपेट पुलिस फायर स्टेशन के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद तकरीबन 5 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के ज़िले बिदर में लोकसभा इंतखाबात की वोटों की गिनती कल 4 जून को बिदर शहर के BVP कॉलेज में होने जा रही है। बिदर डिप्टी कमिश्नर व ज़िला इलेक्शन कमिश्नर ने BVP कॉलेज पहुंचकर गिनती के मराकज़ का मुआयना किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया और बादअज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। ನಡೆಯುವ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 8 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ETPBS ಸರ್ವಿಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 ಹಂತದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 7:15 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೀಡಿಯಾ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ 3 TV ಮತ್ತು 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಳೆದ ಸಲ MLA ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ. अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। हैदराबाद की आवाम के लिए राहत की खबर, तेलंगाना में मानसून की आमद। मंगल से आइंदा 3 दिनों तक रियासत के जुनूबी अजला में बारिश का इम्कान। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स, शहर हैदराबाद में शराब की फरोख्त पर होगी पाबंदी। बार्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और क्लब्स को पुलिस ने जारी कर दिए अहकामात। लोकसभा नतायज के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस का बड़ा ऐलान, 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक अवामी मकामात पर पटाखे जलाने पर होगी पाबंदी। दिल्ली शराब घोटाला केस, BRS MLC कविता को कोई राहत नहीं, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। कविता मजीद 1 माह 3 जुलाई तक जेल में ही रहेंगी। मलारदेवपल्ली के बाबिल नगर में दीवार गिरने का खौफनाक वाक़या, 2 कमसीनों की मौत जबकि दीगर 2 जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, तफ्तीश जारी। खबरनामे में बस अब इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।